Hi guys, this is Isha Kapoor and you're watching Vlawgish. So this video is all about a judgment which is all over the internet, which is all over the social media platforms, and all of you are discussing about it. I saw blogs, I saw all the content creators talking about it, and even I saw you people discussing in various groups. So I thought, why should I not give some clarity on the concept? Yes, it is about the judgment rendered in the case of Utsav Kadam versus State of Assam. You all know him as the popular IIT boy. I wanted to refrain from taking the name, but since the judgment contains the name, I have taken it. मुझे आपको एक बात बतानी थी कि जब भी हम किसी जजमेंट को पढ़ते हैं या जब भी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइव लॉ, बार एंड बेंच, जिससे कि हम लॉयर्स या हम लॉ स्टूडेंट्स ज़्यादातर पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हम एक हेडिंग को देख के अपना व्यू बना लेते हैं, वो बहुत गलत है. आई एम नॉट अगेंस्ट रीडिंग फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज आई डू दैट माई सेल्फ. दीज आर एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर वी गेट लीगल डे टू डे न्यूज़. अदरवाइज कोर्ट्स की न्यूज़ कौन प्रोवाइड करता है? लेकिन वहाँ जाके जजमेंट को अंदर तक पढ़ना इज़ वॉट यू नीड टू डू एंड इज़ द काइंड ऑफ क्लैरिटी दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू थ्रू व्लॉगिश. और अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, आप में से कोई है जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहता है या कर रहा है, तो आपको भी इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर तक जाना चाहिए. अगर आपने एक बेल की जजमेंट पढ़ी तो आपको बेल के और कॉन्सेप्ट्स को भी साथ साथ रिवाइज़ कर लेना चाहिए. और अगर हम ऐसे ही क्लासेस की बात करें तो अनअकैडमी भी तो आपको ऐसे ही क्लासेस की गारंटी देता है. ये क्लासेस की गारंटी कैसे मिलती है? मैंने देखा कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो ही इस तरह से डिज़ाइंड है. आपके पास क्वेश्चंस पूछने के, डाउट्स पूछने के, लाइव सेशंस लेने के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इवन आई वाज एस्टोनिश्ड हाउ विल द टीचर्स मैनेज दैट. बट आई देन गॉट टू नो दैट अनअकैडमी विल नॉट assign one teacher to one course or even two teachers to one course. What they are doing is they are creating a full batch of teachers. They are creating one batch of teachers to teach the number of students that join that batch. अगर वो एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं तो भी उनको उतने ही टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, उतनी ही अटेंशन देंगे, उतने ही ज़्यादा अमेजिंग नोट्स देंगे और उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा व्लॉगिश के थ्रू. अगर आप व्लॉगिश के सब्सक्राइबर भी हो और जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको 10% एडिशनल ऑफ भी मिलेगा. सो आई वुड रिकमेंड कि एज यू वॉच दिस वीडियो, इफ़ यू थिंक यू लाइक द कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट वी आर गिविंग थ्रू दिस वीडियो, then you must go and check the UNACADEMY's platform too. The link has been given in the description box. अभी करोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अगर करो तो मुझे भी ज़रूर इंटीमेट करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. अगर आप में से किसी के भी रिव्यूज़ अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी उन क्वेरीज़ को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. तो all of you think that the bail in this case has been granted because he is an IIT student and also because the judge who was giving judgment in the case considered him an asset for the society and a talented person. While I agree that when I read the judgment, I found these words in the judgment, they were present in the judgment, they were written by the judge, but there were a lot more things that have been missed by many other media reporting platforms and many other content creators out there. So I think it is the correct time to discuss with you all of that. Let me just first tell you under what sections the accused has been charge sheeted. And when I say the word accused, I always say that you should remember that an accused remains an accused until he is convicted by the court. So we must not frame our mind in a way that we should not give any relief to the accused and we should deny all his or her rights, irrespective of the gender. So he was charge sheeted under sections 376, 328, 307 and 120B of the Indian Penal Code. You must know that the accused is a 21 years old boy. He is, as it has been mentioned in the judgment, and I am quoting the words of the judgment, he has been called a brilliant student of B.Tech at IIT Guwahati. And you must know, this is something very important from my eyes, you must know that he has been in judicial custody for 120 days before he was granted bail by the court. Why this is important? Because you all know the concept of bail very well. Bail is granted as a right to the accused. So you know that jail is an exception and bail is the rule. All of you know that. So whenever
investigation is completed and whenever it appears to the court, whenever it is brought before the court, that the accused will not hamper the investigation in any manner and he is not required further in custody by the investigating authorities, then in usual circumstances the accused is granted bail. And I think this right is extremely important, because think of a situation where in the end the court comes to a conclusion that the accused is actually not guilty. He is not convicted in the end, and it also comes to the knowledge of the court that he has not been granted bail since a period of say 7 to 8 years while the trial was being conducted. Don't you think that this hardship is absolutely unnecessary, is absolutely not good for the person who was accused of the crime and who has not done it? That is why bail is granted to even accused persons. That is why even accused and even convicted persons have certain rights in the society. So I'll tell you, the facts was such that on 28th March 2021 at about 9 p.m. it has been alleged as per the charge sheet in this case that accused lured the victim to a place where he took the victim to a place and where he told her that he will be discussing certain official responsibilities with her, but on that pretext he took her there and the alleged incident of rape took place. It has also been alleged that he forcibly administered her alcohol. So now I'll be telling you what the court actually said. आप सबको सिर्फ इतना पता है कि कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि वो IIT स्टूडेंट है, क्योंकि वो बीटेक स्टूडेंट है और क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट है इसलिए उसे बेल दी जानी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने साथ ये भी बोला कि विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों ही लोग जो पार्टीज़ हैं केस के, एक जिसके साथ कुछ गलत हुआ है और एक जिसने शायद कुछ गलत किया है, वो दोनों ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं. आई वुड से कि अगर मैं उस जगह पे होती, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट मैंने ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वाली बात लिखना मुझे उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगा, बट फिर भी जो आगे लिखा हमें वो स्किप नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने बोला कि बेल के टाइम पे कोर्ट इज़ नॉट इन्वाइटेड टू डिस्कस अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस. कोर्ट इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू सी वेदर बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट, कि इससे किसी को कोई हार्डशिप तो नहीं होगी या किसी का कोई इररिपेरेबल लॉस तो नहीं होगा. कोर्ट ने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ, हम मानते हैं कि एक प्रेमा फेसाई केस है, लेकिन कोर्ट ने बोला हम ये भी मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, अक्यूज्ड 120 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रह चुका है और अक्यूज्ड की और रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए. अब हमें नहीं लगता कि किसी भी एविडेंस को अक्यूज्ड टेम्पर कर पाएगा. कोर्ट ने प्रेमा फेसाई केस बोला बट अभी जजमेंट नहीं दी है. कोर्ट ने ये भी बोला कि ये दोनों ही विक्टिम और अक्यूज दोनों दो डिफरेंट स्टेट से है. दे आर लिविंग इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, सो देर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ दे मीटिंग ईच अदर, बम्पिंग इनटू ईच अदर एंड द अक्यूज ट्राइंग टू lure the victim again, accused trying to do something to the victim again. So there are least chances of that. They both are young, as they said. And again, the court emphasized on the very fact that there is least possibility of the accused tampering with the evidence. So these were the real reasons why the accused was granted bail. If you like this video, please share it with your friends. Please share it with those whom you think need this conceptual clarity. And I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.